Hello everyone, I am Minakshi Sharma, Assistant Professor in the Department of Sciences, Trinity College, London. Today, we are going to discuss the cell as a basic unit of life. So, मैं पहले बताना चाहती हूँ, what is cell? Cell is a basic structural, functional, and biological unit of all living beings. Cell can be eukaryotic and prokaryotic. All the organisms that are composed of cells. The first time the cell was seen by the Robert Hooke and in 1665. Then after the Anthony van Leeuwenhoek first visualized the cell in a living organism like animal cell. A cell can replicate independently, hence also known as the building block of the life. Each cell contains a fluid, cytoplasm, that is called also living plasm. All the organelles are present inside that cytoplasm. Means mitochondria, chloroplast, nucleus, these all organelles, these all membrane-bounded organelles are present inside this living plasm. So these are the basics, and we are going to take the history of the cell. The first cell was originated at 3.5 billion years ago. And the first organism that is a chemoheterotrophs. Chemoheterotrophs means the organism or the microbes. These are basically the microbes that use the organic chemical substance as a source of energy and the organic compound as a main source of carbon. Means they use the carbon and the chemical energy to make their food and to sustain their life. Now, the cell having a genetic material. They're having a DNA and RNA as a genetic material, depending upon the cells. Might be it is a plant cell having a DNA as a genetic material. Sometimes some virus is having the RNA as a genetic material. Depend upon the species to species, the genetic material may be varied. But this genetic material plus protein, if the genetic material, including that protein, that called chromosome. Now see, the chromosome क्या होते हैं? What is chromosome? हमारे सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम क्या होते हैं? Actual length of the chromosome is around 2.5 meter length, but that is present inside our nucleus, which we cannot see with the naked eye. That wrapping of that chromosome inside the nucleus was done by a protein that is called histone protein. It is a positively charged protein and DNA is a negatively charged. This positive negative interaction will hold that whole genetic material inside that small nucleus. So that compact form of your material is called chromosome. In a human being, there is a 23 pair of chromosome. Right? Am I clear to you? Next is the bacteria. Sometimes that is aerobic bacteria or sometimes it is an anaerobic bacteria. Aerobic bacteria that live in the presence of oxygen, or anaerobic, they live in the absence of the oxygen. So aerobic bacteria evolves the mitochondria, means हमारे पहले तो prokaryotes आए थे, then after there is a eukaryotes. When we are talking about the prokaryotes, means पहले वाले organism, and we are talking about the eukaryotes, means कि they are modified and they get evolved from the prokaryotes. So अब ये evolution क्या हुआ? First mitochondria आया. जब aerobic bacteria में evolution हुआ तो mitochondria में. तो ये evolution कैसे हुआ? ये evolution का एक process था. That process is called endosymbiosis. That is called endosymbiosis. Endosymbiosis means anaerobic eukaryotic cells जो होते हैं, they engulf an aerobic prokaryotic bacteria. By doing this thing, they make the mitochondria. Next is photosynthetic cyanobacteria. मैंने आपको एक mitochondria का evolution बताया that are also present in the plant cell as well as in the animal cell of the eukaryotes. Now the second evolution is that कि how we plant कैसे evolve हुई, green color के plant कैसे आए, ये green color का pigment कैसे बना. So जो photosynthetic cyanobacteria जो पहले से अपना खाना खुद बनाते थे, they get evolved and they by the evolution of their chlorophyll, they form the chloroplast, that green color component that is present in the plant cells. Components of the cell is carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Mostly 95% of the component is this, and the rest is other.
नेक्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेल इज अ बेसिक यूनिट, आई हैव टोल्ड यू द बेसिक यूनिट. अब दो सेल कंबाइन करेंगे, व्हेन द टू सेल्स कंबाइन दे फॉर्म अ ग्रुप, दैट ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू. व्हेन टू ग्रुप ऑफ टिश्यू combines they forms the organ. When the two organs or two or more organs combines, they form the group of organ system. These all group of organ system form the organism which I am standing in front of you. I am an organism, human being, right? इसी तरह से प्लांट सेल भी अपने इस तरह सा का बेसिक दोनों का सेम रहता है. प्लांट और एनिमल सेल्स में दोनों चीजें ये सिमिलर रहती है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे. नाउ इफ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट देयर इज अ ह्यूमन, दैट इज अ ऑर्गेनिज्म. अब उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, लाइक लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. देन we are talking about the single organ. The stomach is a single organ. Then we are talking about how the stomach is formed. Stomach is formed a group of tissues which have a similar structure, which have a similar functions. Now, then we are talking about the tissue. That tissue are made up of the similar kind of cells, right? Similar in the plants. प्लांट्स में अगर हम देख सकते हैं, एक पूरा प्लांट जो होता है दैट इज अ ऑर्गेनिज्म, और उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लीफ, स्टेम, फ्रूट्स. अगर हम बात करें एक सिंगल ऑर्गन की, लीफ इज एन अ सिंगल ऑर्गन. लीफ के अंदर बहुत सारे अलग टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं. देन दैट टिश्यू, इनसाइड दैट टिश्यू देयर इज अ सेल, and each cell having a nucleus, so small. तो सेल से आपके टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. सो आई थिंक एम आई क्लियर टू यू कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गई. आई रिपीट वन मोर टाइम. ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि इट्स बिग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. Organization having a very smaller part, that is a cell, like plant organization having a cell as a basic unit. When we talk about the chemistry, है ना, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी हो, इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट यू आर स्टडिंग द केमिस्ट्री, बिकॉज दे आर both are, without chemistry there is no bio. So chemistry में atom is the structural unit, like that. In the bio, the cell in a living thing, the cell is a structural and the functional unit. Right. Next we are talking about the difference between the plant cell and animal cell. अब मैंने आपको दोनों का ऑर्गेनाइजेशन बताया. Now we have to discuss about the similarities and the differences. Or similarities. First we are going to take the differences. Comparison. Differences. The plant cells जितने भी होते हैं mostly they are larger in size. And animal cell is smaller. तो अगर हमको किसी भी चीज को हम पहले देखते हैं, तो when we are looking something, हम पहले अपीयरेंस पे जाते हैं. तो प्लांट दिखते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है मोस्टली दे आर बिगर इन साइज, and they are usually, animal cells are usually smaller in size. तो शेप की बेसिस में plants are hexagonal in shape and the animal cells are circular in shape. Plant cell having a plasmodesmata. Obviously plant cell के पास एक additional wall होती है जिसको हम cell wall कहते हैं. That cell wall दो तीन तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, टर्शरी. बट इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज द वन connection that is called plasmodesmata. अब एनिमल्स में प्लांट्स वॉल होती ही नहीं प्रेजेंट, तो देयर इज, तो प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि सेल टू सेल कनेक्शन हो जाता है. तो प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है. Now, plants are having a one green color pigment. With the help of that pigment, they can make their own food. So that pigment is chlorophyll. That is absent in the animal cell. Next, there is a tonoplast present inside the vacuole. But tonoplast is present inside the vacuole of the animal cell, because animal cell का जो vacuole होता है that hardly very bigger in size. It is very smaller in size. बट प्लांट का जो टोनोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, वो बड़ा होता है. उसकी टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए देयर इज अ मच ऑफ सैप इज प्रेजेंट इनसाइड दैट वैक्यूल. नेक्स्ट इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इज एब्सेंट एक्सेप्ट द मोटाइल सेल्स ऑफ द लोअर प्लांट. ये वैसे एब्सेंट होता है बट मोटाइल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है बिकॉज दे डू द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ लाइजन. बट द एनिमल सेल दे हैविंग अ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट. Nucleus is present on the periphery. Obviously, अगर हम plant cell को animal cell को देखेंगे, I'll show you the picture. Animal cell having a hexagonal shape. You can see in this picture the animal cell is
hexagonal, rectangular in shape. But any plant cell, animal cell is round in shape and the plant cell is hexagonal. So you can see that the nucleus is on the periphery, side में, wall के पास. But in the animal cell, the nucleus is always lies in the center. It is a powerhouse of the cell. So this is clear to you. The lysosomes are rare in the animal plant cell, but it is present in the animal cell. It is called the suicide bag. जितना भी हमारे अंदर poisonous substance होता है, they can break down, they can engulf and then break down and eliminate it from the cell. Next is storage material. अब हम बात करेंगे, अगर the plant can do the photosynthesis, then they can produce so much of the chloroplast, and that chloroplast can be stored in the form of the starch. But we also take that starch, we can take the starch in the form of carbohydrate, animals can. But that animal can eat more and more than how, अगर हम लोग एक रोटी खाते हैं, suppose plant to produce कर रहे, they overproduce and they store that overproduced substance in the form of starch. But in case of the animals, they can store that substance. We eat more, but we store that starch in the form of glycogen in our liver. Getting my point? Next है, अगर हम फिर भी मैं आपको एक बार वन मोर टाइम दोनों के प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस बताती हूँ. और अगर आपको प्लांट फर्स्ट डिफरेंस मैंने प्लांट सेल वर्सेस बताया था, अब मैं सेकंड आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि अगर आपको प्लांट सेल वर्सेस याद रहते देन इट इज फाइन. आप इसको उल्टा भी याद कर सकते हो. एनिमल सेल डू नॉट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल डू नॉट सराउंड बाय द सेल वॉल, एंड एनिमल सेल्स वैक्यूल is smaller or might be absent. मतलब it is smaller in size as compared to the plant cell. So I think hope it is clear to you. Oh, this is the structure of the plant cell. These the middle point आप देख पा रहे होंगे. The Google आप देख रहे होंगे कि the Golgi vesicle. These are the common thing in the plant cell and animal cell. Golgi apparatus is the same in both plant and animal. Membrane, plasma membrane दोनों में प्रेजेंट होता है. देन पेरोक्सिसोम, दे आर प्रेजेंट इन बोथ द सेल. साइटोप्लाज्म ऑलवेज प्रेजेंट इन बोथ द सेल. न्यूक्लियस दोनों में होता है, बस एक में साइड में होता है और एक में सेंटर में. देन न्यूक्लियस के बाद देयर इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, you can see that around the nucleus there is a rough endoplasmic reticulum where I am marking red color. So there is a rough endoplasmic reticulum जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. We have done it in the 9th standard. And there is a smooth endoplasmic reticulum that is वहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं. राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, प्रोटीन और फैट सिंथेसिस का. अगर इफ इट इज अ रफ देन इट सिंथेसाइज द प्रोटीन, इफ इट इज अ स्मूथ इट इज सिंथेसाइजेस द प्रोटीन and fat. Mitochondria. Mitochondria is a powerhouse. It helps to produce the ATP inside the both plant and animal cells. Now, these are the same things which are present in the plant cell or animal cell. Now, we are talking about the differences. आप इस picture में बहुत clearly देख सकते हो कि मैंने जो last में side में रखा है, that is lysosome and central is always present in the plant animal cell. Chloroplast, cell wall, amyloplast and vacuole, they are present in the plant cells. So hope I think you getting my points. The differences between the plant cell and animal cell is very much clear to you. Or then a little bit I want to tell you regarding the सेल थ्योरी. सबसे पहले ये सेल, अब देखो सेल हमने पढ़ लिया कि सेल का एवोल्यूशन क्या हुआ. सेल को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया. देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल थ्योरी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उससे पहले आपको सेल पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये आपको सबसे लास्ट में बताया. सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो देयर इज अ 3 पोस्टुलेट्स इन द सेल थ्योरी. All living things are made up of cell. जितने भी living beings है, चाहे plant है, चाहे animals है, चाहे microbes है, virus है, they are made up of cell. But कुछ cells ऐसे भी होते हैं जो acellular ही होते हैं. Cells are the basic unit of the structure and the function of the living things. Now, living cells comes only from the pre-existing cells और living cells. मतलब कि अगर कोई living thing होगी तभी ना हम ही अपना एक सेल जनरेट कर सकते हैं. हमसे जो जनरेट होंगे मतलब एक living being ही एक living being को प्रोड्यूस कर सकता है. These 3 postulates are given by these 3 scientists. Matthias Schellender and Theodor Schwann and Rudolf Virchow. These are the 3 scientists, German scientists. These are German botanists. One is German botanist who discovered the cell in the plant.
And Theodore, he's a zoologist, he discovered the cell in animals. And Rudolf Virchow, he was the proponent of the cell. जो ये theory आई है, that is proposed by the Rudolf Virchow ने की थी, and which state that all cells are composed of the cells and they are made up of the pre-existing cells. So thank you students for listening me, and this is all about the cell. In next lecture we are discussing about the other things regarding the division and the mitosis and the division of the cells. Thank you so much.